we're on a clock here, so I'm just going to get straight into the conversation. And I'm going to start with Deepti. Deepti, ये पिछला महीना बहुत बिजी रहा है आपके लिए. आप इवेंट्स पे आ रही हैं. आप कल था कुछ पूना, फिर आज वापस जाएंगी आगरा. ये बताइए, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ बैठ के आपने सोचा कि हाँ कुछ किया गया है मेरी तरफ से, we have done something? Did someone tell you something and you thought that okay, this is what has happened? So firstly, hello everyone. तो मैम जैसा आपने बोला कि आफ्टर वर्ल्ड कप आपको थोड़ा भी टाइम मिला कि नहीं, आप कितना बिजी चल रहा है आपका, तो अभी एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ तो किया है. जिस चीज़ का हम इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे थे और फाइनली वी डिड इट इतने सालों बाद, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. और अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो घर पे भी उतना टाइम मिल नहीं पाया फैमिली के साथ. अभी लाइक इवेंट्स चल रहे हैं हेयर एंड देयर, तो आई थिंक अभी हम लोग काफ़ी बिज़ी चल रहे हैं. बट बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो हमारा ड्रीम था, अगर वो वाकई में जब ट्रू हो जाता है, उसके बाद एक्चुअल आपको फील होता है कि एज अ प्लेयर और एज अ टीम आपने क्या अचीव करा है. और जो रोड आपके नाम पे जो रोड है, आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे होने वाला है कि द रोड विल बी नेम्ड द दीप्ति शर्मा रोड अप टू योर होम? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं था. लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब भी अपना सोसाइटी में जाते हैं और आपके नाम से जब सोसाइटी को जाना जाता है एज वेल एज द रोड, जैसे आपने बोला, तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है. Amol, since you are a very relaxed and a secure guy, you'll be okay if I ask the first question about Deepti and not about you. Amol calls Deepti Stokesy after the England all-round captain Ben Stokes. Why is that? What's the reason? Where did that come from? Firstly, warm greetings to everyone. Good afternoon, and really honored and privileged to be here at the Hindustan Times Leadership Summit. Stokes, because there are a lot of similarities, isn't it? I mean, I worked a little bit with Ben Stokes with Rajasthan Royals in the IPL, and there are a few similarities with Deepti. One, she bats left-handed, she bowls right-handed. Stokes does that. She bats at number 6. Stokes does that. Most hard-working cricketer in the team. Never misses a match. Stokes doesn't miss a match. And above all, I think her throw resembles to Ben Stokes. एक बार आके इसका throw पकड़ के दिखाइए. So Ben Stokes is, I think, a 6 feet 4 inch 5 inch giant with red hair and tattoos. But when cricketers look at him and they look at Deepti Sharma, they can see the similarities. The throw is important, Sharda. The throw is the most important. You can't, if you blink, you'll know it. You'll wear it. दीप्ति, एक स्टोरी भी है ना एक थ्रो के बारे में, जो आपने 50 मीटर का थ्रो किया था हिमलता काला. आप वो कहानी सुनाइए. और आपकी एज क्या थी उस टाइम? I was 9 years old उस टाइम. 9, हाँ. तो उस टाइम मैंने खेलना स्टार्ट किया था, तो एक थ्रो की वजह से ही पूरा मेरी जर्नी शिफ्ट हो गई. बैकग्राउंड ही ऐसा था, मतलब भैया खेलते थे, सुमित भैया, तो उनकी वजह से स्टार्ट किया. तो मैं जस्ट देखने गई थी कि वो कैसे खेलते हैं मैच. स्टेज पे बैठी हुई थी, तो ऐसी पास ऑन करती हूँ दूसरे किसी प्लेयर को, बॉल आ जाता है नेट्स में, तो फिर वो थ्रो करती हैं और वो डायरेक्ट जाके स्टम्प को लगता है, सिंगल स्टम्प जहाँ पे वो लोग फील्डिंग कर रहे होते हैं, तो सडन जाके लगता है. तो आजू बाजू जो भी लोग होते हैं वो भैया को बोलते हैं कि अरे अपनी बच्ची को क्रिकेट खिलाओ, वो एक दिन ज़रूर देश का नाम रोशन करेगी. तो फिर उसके बाद से क्रिकेट स्टार्ट कर दिया. और लेकिन आपका थ्रो जो है, आपके शोल्डर में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? आप पुशअप्स करते हो, क्या है, बताइए हमको. आई थिंक एक तो वो मैं बोल सकती हूँ नेचुरल है, मतलब जब शुरू ही जर्नी इसी चीज़ से स्टार्ट हुई है, तो मैं बोल सकती हूँ नेचुरल है. प्लस मैं स्ट्रेंथ पे भी वर्क करती हूँ, तो आई थिंक उससे भी डेवलप हुआ है काफ़ी. और स्टोक से मिली है? बेन स्टोक से आप चांस मिला है मिलने का? नहीं, अभी उनसे तो नहीं मिली हूँ मैम. अच्छा, अमोल आपको स्टोक से बुलाता है, और आप ये बताओ, आपने अमोल के बारे में क्या सोचा जब वो पहले आए आपके साथ काम करने, और आपको, और फिर बताओ वर्ल्ड कप के दौरान क्या हुआ? अब पहले तो, हाँ, पहले जब आया आप बताओ आपका इंप्रेशन क्या था? हाँ मैम, जब मैं सर से वेरी फर्स्ट टाइम मिली थी बैंगलोर में, हमारे 3 days मैचेस चल रहे थे. आई मीन कैंप में ही मैचेस लगे हुए थे उस टाइम पे. तो जब सर से पहली बार मिली तो ऐसे फील ही नहीं हुआ कि मैं सर से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ. एंड देन उसके बाद जब भी हमारी सीरीज़ थी, अगर मैं टेस्ट मैच का आपको बताऊँ तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. सर ने मतलब
सर ऑलवेज़ मोटिवेट करते हैं और सबसे अच्छी बात है कि सर मतलब इतना फेथ और ट्रस्ट दिखाते हैं मेरे ऊपर एज अ प्लेयर, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप अच्छा करो। और एक होता है ना मैम, कोच का ट्रस्ट प्लेयर के ऊपर बहुत ज़रूरी होता है, तो मुझे लगता है कि जो भी प्रेशर होता है आधा तो वहीं से रिलीज़ हो जाता है जब भी सर मुझे बोलते हैं कि चल दीप्ति अभी यू हैव टू डू इट। तो मतलब ये चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और हमेशा जब भी बोलते हैं उस चीज़ पे मतलब एज अ प्लेयर मैं टीम के लिए खड़ी उतरती हूँ, दैट आई हैव टू डू फॉर द टीम। तो अच्छा लगता है, और सर ऑलवेज़ मोटिवेट करते हैं, चाहे नो मैटर व्हाट प्रैक्टिस हो या मैच हो। तो मुझे लगता है कि एक कोच का प्लेयर को लेके ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ट्रस्ट। ये तो अच्छी चीज़ कही, लेकिन वर्ल्ड कप में हम 3 मैच हारे थे और हमारी हालत काफ़ी टाइट थी उस टाइम। तो वो तीसरा इंग्लैंड के साथ मैच हारने के बाद आप ये अच्छा कोच, उन्होंने फिर क्या अपने आप का नया रूप उसका सुनाइए सबको यहाँ। दीप्ति, सी पहले से वार्न कर दिया मुझे। नहीं मैम, देखिए अगर आप बैक टू बैक 3 मैच हारते हैं तो नहीं, कहा उन्होंने क्या, रीज़न मत दीजिए, उनका डिस्क्राइब करिए हुआ क्या, अगर आप कर सकती हैं तो। मैम देखिए ऐसे तो मुश्किल है, लेकिन ऐसे ऑब्वियसली मैं ऐसे बोल नहीं सकती क्योंकि वो टीम की ही बात रहती है, ड्रेसिंग रूम की। लेकिन बुरा ऑब्वियसली एज अ टीम बुरा लगता है जब आप किसी भी मोमेंट पे जाके जीता हुआ मैच हारते हैं। तो चलो, Let me ask you the question. Yeah. I'll take this on behalf of my player. I think, sometimes there are times in sports that, things don't go your way. I realized after the third game against England when we lost, I won't say, we lost. The language that we spoke in the dressing room was that we were just not able to cross the line. Not that we lost the game. We were just not able to cross the line. All the 3 games that then we couldn't cross the line were in the pocket, basically. And they were hurting. They were really hurting in the dressing room. I could sense it, that all the 15 players were hurt in the dressing room. And at times, as a coach, you realize that this is the time when you just have to put the finger on that scar. Sometimes, you just leave it for some other day, but at times you just have to do that once. And I realized that was that apt time. Sorry. दुखती रग पे just press किया तो I think they realized it later, and credit to everyone, including Harman, including Smriti, including Deepti, that they reacted really positively to that talk in the dressing room. I think they had a secretive meeting, possibly I came to know a little later. All the players, and they said that okay, we need to turn this around, and India expects a little better than that from us. And I'm glad that they took it really positively. I just want to quickly touch that they're not just their ability is second to none in the country. They're amazingly talented and skillful players, but they are good human beings as well. Amazing human beings. And so you're saying that you found the key that turned the lock almost in that sense. You also had, I'm not sure how many of you saw this on social media. Go and look for it if you haven't. It's called Amol Muzumdar's sort of 7-hour speech that he said, lock yourself in a bubble for 7 hours, and it's there on Instagram. So where did that speech come from? Do you prepare speeches, or was that spontaneous? This is the World Cup final. You've just beaten Australia in that great game, a big emotional high. Where did that big speech come from? Or was it easy? It wasn't easy. But I'll tell you, the background with that. It's just, 2 years into this job, I realized that this team, this Indian women's cricket team, these young minds, they don't just listen to what you're saying. They absorb every word that you're talking. So I had to choose my words really carefully in this dressing room.
So I realized in the job, I realized the power of words with them. And as a leader or as a coach, you just have to be careful of what you're talking. That particular final speech, in the semi-finals, I had narrated a couple of stories in the huddle, and they were inspiring, not just for the players, but for the support staff as well. And then in the finals, I think the pressure was enormous. I mean, you can imagine a World Cup final, that to a home World Cup in my home city, Mumbai. There were a lot of things that were happening on that, on that morning. Plus, there was rain around, so whatever we had thought the previous night had to be kept on hold because things were unfolding as on that day. So I had not prepared anything. But the most important thing was my mind was, crowded with a lot of thoughts. And then I realized that if my mind is crowded, I can imagine what the players must be going through. So the most important thing was to stay in the present. And how do I bring them back to present? If they focus on other things, then we won't be in 2nd November 2025. So the most important thing was to stay in the present. And just happened to see the crowd. There were 50,000 in the D.Y. Patil Stadium and plus about 50 crores watching outside. So there was no pressure as such, but just that, we had to stay in a bubble. And if I knew that if they play to their potential, we would be able to crack this one. I just wanted to ask you, when you're talking about this, about being in a bubble, this is like a crisis manager's sort of situation. What would you tell? I'm sure there are managers in this room who want advice from athletes who are in these very tense situations. The whole country is looking at you. Everything is on television. Is there a magic bullet? What's the formula to kind of work through any kind of crisis that you and your team may be faced with? No, as I said, sometimes, as a leader, you could be quiet as well. I know sometimes it could be boring, just doing your job day in, day out, just showing your face actually sometimes. You don't have to be in limelight all the time to acquire the desired results. You just have to listen to what is around you. And as I said, the power of words, I realized that it's fantastic. They absorb a lot of words. When you speak something, they absorb it. And it wasn't just the final speech, but I've got a whiteboard which I carry generally everywhere. Deepti's bored with it, but whatever I have to speak, I write it down. It could be just 2 words, it could be a line, or it could be 4, 5 points, bullet points, which I want to convey to the team. Especially against Australia, when we were chasing 338, I knew that nothing could be said in the interval. I mean, what can you say? I mean, they were on the field for 50 overs. They fielded for 338 runs. Australia were right on top of us. I just wrote on the whiteboard that we just need one more run than Australia to qualify for the finals of the World Cup. As simple as that. Could just come back to the basic and probably simplify it for the minds that are already clogged and under pressure. Deepti, Amol is talking about pressure, and you are seen as one of the best clutch players that is there in the Indian team. You are able to walk into a situation, take control. हमने सभी मैचेस में देखा कि आप जैसे विदाउट प्रेशर लग रहा है कि आप पे प्रेशर है नहीं, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स होता है एज अ प्लेयर, जो स्किल आप एग्जीक्यूट करते हैं, वो कहाँ से आया है आपके लिए? आपका अप्रोच क्या होता है ऐसी सिचुएशंस में? आई थिंक वो जब मैंने अपना पहला मैच स्टेट के लिए खेला था, तो तभी से वो अपने जहन में डाल लिया था कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रेशर सिचुएशन अगर आएगी तो आपको फेस करना है. लेकिन आप अगर काम एंड कंपोज रहेंगे तो यू विल हैंडल एनी सिचुएशन. तो मैं हमेशा एक ही चीज़ सोचती हूँ कि
कोई भी जैसे बड़े से बड़ा मैच हो या छोटे से छोटा मैच, हमेशा मुझे अपना 100% देना है विद द पॉजिटिव माइंडसेट। तो जो भी हम बात करते हैं, और आई थिंक इस चीज़ में हेल्प मैंने मेरे भैया ने करा है, और हमेशा जो भी मैच खेलती हूँ उसके बाद मैं उनसे हमेशा बात करती हूँ, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, वो मुझे गाइड करते हैं। और मुझे बोलते हैं कि कैसे आप मोटिवेटेड रह सकते हो, और कैसे मतलब जैसे मुझे चैलेंजेस पसंद है तो मैं हमेशा पसंद है? जी बहुत पसंद है। और जब भी प्रेशर सिचुएशन आती है, आई ऑलवेज इन्जॉय कि ऐसी सिचुएशन आए जिससे कि मैं थोड़ा और बेटर प्लेयर बन सकूं और टीम के लिए अच्छा कर सकूं। तो इजी रहता है, तो मतलब ये होता है कि मीन्स हो जाएगा, तो वो वाला थॉट प्रोसेस जब रहता है तो कहीं ना कहीं होता है ऐसा। बट देन जब टफ सिचुएशंस आती हैं लाइक सेमीफाइनल एंड द फाइनल्स, तो मुझे अच्छा लगता है वहाँ से जब टीम को हारी हुई जगह से जब आप जिताते हो तो। बताइए ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि मैं उसको आउट करूँ ना? I'm sure all of you know that running a non-striker is a very big deal. If you don't, please raise your hands and ask the person sitting next to you. They'll explain. Go बोलिए. देखिए जो रूल में है वो तो हमें करना ही पड़ता है अगर रूल में है? हाँ ऑब्वियसली। और उस टाइम पे ऐसा था कि तभी ग्राउंड पे डिसाइड हुआ था कि यू नो लाइक इनफैक्ट द वार्निंग ऑल्सो वी गेव टू हर। तो उसके बाद भी लगा कि हमें वो नहीं हो रहा है, तो उसके बाद करना पड़ा। मेरे पास मैसेज आया कि नहीं अभी हम लोगों को करना पड़ेगा, सो दैट्स वाई मैंने वो रन आउट किया। And she ran out an England player. That's an England player, and the English got very sort of righteous about it, and it was absolute nonsense. दीप्ति आप ये चीज़ बताइए, आपने ये कहा है कि विमेंस वर्ल्ड कप के बाद आपने कहा कि जब आपकी इंटरव्यू की जा रही थी फाइनल के बाद, आपने कहा यू वांट मोर मैचेस। ये बताइए, व्हाई डिड यू आस्क फॉर मोर मैचेस? व्हाट इज दिस ऑफ ऑल द थिंग्स यू सेड वी वांट मोर मैचेस टू प्ले? नहीं, आई थिंक पहले से तो काफ़ी अच्छा हो गया है। और क्योंकि पहले नंबर ऑफ़ मैचेस कम हुआ करते थे, अगर मैं पहले की बात करूं तो अभी इस चीज़ के लिए बीसीसीआई ऑल्सो टेकिंग गुड केयर फॉर वुमेंस क्रिकेट ऑल्सो। अभी आई थिंक काफ़ी बेटर हो गया है, और इफ़ और भी रहेंगे लाइक इन द डोमेस्टिक सर्किट ऑल्सो। दैट्स वाई आई टोल्ड कि डोमेस्टिक को जितना ज़्यादा मैचेस खेलने को मिलेंगे वो डेफिनेटली वुमेंस क्रिकेट को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट है जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भी थोड़ा सा छुपा हुआ है, जो कि अगर ज़्यादा मैच खेलेंगे तो डेफिनेटली जो अच्छा टैलेंट है वो भी और भी निखर के आएगा। Amol, what has this whole experience of working with the Indian women's team taught you about yourself, about coaching? You're known to be a bit of a reader. Did you go back and look at certain books written by other coaches? What was your sort of education coming into this, or was it? How did you when you look back at the last say? There are multiple things, Sharda. I won't be able to pinpoint on one particular thing, but just the experience that I gathered while playing cricket, experience that I gathered while doing some media work in the last 10 years before I took up this job, and just coaching different teams. I mean, I was involved with IPL, with the Rajasthan Royals for a good 3 years. Then with Mumbai Ranji Trophy team, and then now with the Indian women's team. So I think sport has taught me a lot. It's been a school of life for me, and you just you pick up nuggets from every piece, and you try and make your own castle. That's what I've learned. Also, sport has taught me that every day the scoreboard changes. That's a great line. The applause, yeah, applause fades. But I think what it also teaches is that if you have an impact on others, then it remains forever. And that's what I've strived to do in the last 2 years. That I know that I can make some contribution in these life of these youngsters who are with the Indian team. And did you imagine that you will unseat Shah Rukh Khan as the most beloved female team sports coach? Everybody looks at you and is doing all their very wrong Kabir Khan sort of comparisons. Did you imagine that ever? We call him after the finals, Kabir Khan. Oh, the women called him after. Who are we? Deepti. I mean, I'm not a social media person, but I see everything.
I see a lot of things. I won't lie. I mean, if there are parallels, there are parallels. I mean, you can't help it. People say things. As I said, scoreboard changes every day. The applause fades one day. So all you can do is just remain patient about it and just make sure that you do your job as passionately and as honestly as you can. Kabir Khan वो कहाँ से आया मुझे पता नहीं. Deepti, just rounding up some the questions. Amol, I just want to park this with you for about 30 seconds. If you can remember your favorite memory incident after this match that you can recall, what someone said, maybe something that comes to your mind. I'll come back to you. I'll ask Deepti a question instead. Deepti, recently आप interviews में कह रहे हैं, क्या कह रही है? No, nothing. You want everyone, आप कह रही है that girls should dream big. आपकी सबसे बड़ी, आपकी big dream क्या थी? आप बताइए. क्योंकि जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली ये था कि एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, वो ब्लू जर्सी पहनना है और नेशनल एंथम जब मैंने देखा मैच तो ये सब रहता था, तो मेरा भी यही माइंडसेट था कि मुझे भी एक दिन वहाँ पर जाके खेलना है. और ऑब्वियसली टीवी पे मैचेस आते थे, तो मतलब यही था कि, और सभी गर्ल्स को भी मैं यही बोलना चाहती हूँ जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या जिनका भी इंटरेस्ट है खेलने के लिए, कि ड्रीम बिग रखो, क्योंकि अगर अच्छा सोचोगे और अगर आप इफ़ यू थिंक बिग तो डेफिनेटली वो आपको एक दिन आपके लक्ष्य तक लेकर जाता है. और यहाँ जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ और जो कैमरा में देखेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे लड़कियों और स्पोर्ट्स के बारे में? तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको यही बोलूँगी कि जो भी आपके डॉटर्स हैं उनको आप सपोर्ट करें, क्योंकि विद द टैलेंट कहीं ना कहीं सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है जो नहीं मिल पाता है. बट आई एम लकी कि मुझे वो सपोर्ट मिला, तो मैं चाहूँगी कि सभी को ऐसे पेरेंट्स मिलें जो आप अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकें. और डेफिनेटली स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं फ्यूचर है. अगर आप इफ़ यू सपोर्ट देम तो डेफिनेटली आप भी ऐसे ही सभी को देखेंगे जैसे कि अभी विमेंस क्रिकेट ने जो अचीव करा. Amol, just a last question. Any memory that you want to share before we go about any anecdote, incident you remember from this World Cup that was absolutely that you'll never forget? Well, I'll never forget the catch Harman took, because I was sitting in the dugout, and from the dugout you couldn't see certain things because there were billboards right in front of you. And when she took the catch, I just asked, the bowling coach who was next to me, I just asked him, has she taken it? Yeah, he said yes. And then the euphoria and the noise in the stadium, it just, keeps repeating. And, social media is such that it doesn't allow you to forget that moment. So it just keeps repeating. It was an unbelievable, it was a surreal moment. Which I don't think any Indian who has watched it would forget in their lifetime. I think 1983 was a watershed moment in men's cricket in India. I think 2nd November 2025 at the stroke of midnight could be the watershed moment in women's cricket in India. Amol and Deepti, thank you so much. Another round of applause, please, for this fantastic speakers.